Assalamu alaikum students of class 7th. Today is our topic number 5, which is related to your English book, and the chapter name is the last sermon of the Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. We are discussing the paragraph number 13 at page number 5. Beta, open your book and read out the paragraph number 13. I will read out here from your book. Bismillahirrahmanirrahim. Verily, I have left amongst you that which will never lead you astray. याद रखो, मैं तुम्हारे ख़बरदार रहो, मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ जो तुम्हें तबाह नहीं होने देगी. द बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की किताब है वो. विच यू होल्ड फास्ट, जिसे तुम मजबूती से थाम कर रखो. यू शैल नेवर एस्ट्रे, तुम गुमराही की तरफ कभी ना जाओगे. बिहोल्ड, ख़बरदार. वर्शिप योर लॉर्ड, अपने रब की इबादत करो. ऑफ़र प्रेयर्स 5 times a day, दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करो. सर्व फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो. पे रेडिली द ज़कात पोर्ड यू ऑन योर प्रॉपर्टी, ज़कात अदा करते रहो जो कि गरीबों को दी जाती है और तुम्हारी जायदाद में से ज़कात तुम अपनी अदा करो. एंड परफॉर्म पिलग्रिमेज, और हज को अदा करो. टू द हाउस ऑफ अल्लाह, जो कि अल्लाह का घर है. एंड ओबे योर रूलर्स, और अपने हुक्मरानों की पैरवी करो. एंड यू विल बी एडमिटेड टू द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, तो तुम यकीनी तौर पे अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल हो जाओगे. इसके बाद मेरे प्यारे नबी ने क्या फरमाया है. पैराग्राफ नंबर 15 है, 15 है. लेट हिम दैट इज़ प्रेजेंट कन्वे इट अनटू हिम हु इज़ एब्सेंट. इसके मायने हैं, कि अगर कोई गैर हाजिर है और वो पहुंचा दे मेरा पैगाम उस तक जो गैर हाजिर है. यानी कि लेट हिम दैट इज़ प्रेजेंट, जो कि हाजिर नहीं हो सके. कन्वे इट अन टू हिम हु इज़ एब्सेंट, यानी जो हाजिर है उस तक मेरा पैगाम पहुंचा दे जो हाजिर नहीं हो सका. एंड यू वर आस्क्ड अबाउट मी, व्हाट वुड यू से. अब वो क्या फरमाते हैं हमारे नबी, अगर तुम से मेरे बारे में पूछा गया तुम क्या कहोगे. लोगों से पूछ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट वुड यू से, तुम क्या कहोगे, तुम क्या कहोगे, यानी मेरे बारे में क्या कहोगे. दे आंसर्ड, उन्होंने बैक वक्त जवाब दिया. वी बियर विटनेस, हम ये गवाही देंगे. दैट यू हैव कन्वेड द मैसेज ऑफ, ब्रैकेट में देखें, ऑफ रिलीजन एंड डिस्चार्ज योर मिनिस्ट्री ऑफ नबूवत एंड लुक टू आर वेलफेयर. वेलफेयर, फलाह बहबूद. नबूवत को नबूवत कहें, मिनिस्ट्री कहते हैं. वैसे वजारत को यहाँ दर्जे से मुराद है, नबूवत का दर्जा, नबूवत का दर्जा. तो आपने फरमाया कि अगर मेरे बारे में तुमसे कहा जाए कि मैं कैसा हूँ तो तुम मेरे बारे में क्या जवाब दोगे. तो आप सब ने यकमुश्त जवाब दिया कि हम इस बात की गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम, यानी अपने मज़हब का पैगाम जो है वो सब लोगों तक पहुँचाया है. कि वो गवाही दे रहे हैं कि दीन का पैगाम जो है पहुंचा दिया है और नबूवत का हक़ अदा कर दिया है, या नबूवत के दर्जे से जो हैं वो और हम तक फलाह पहुंचा दी है. देयर अपॉन अल्लाह's रसूल लिफ्टेड हिज 4 फिंगर, शहादत की उंगली पहली उंगली जो होती है बेटा आपके दाएं हाथ की, उसको हम शहादत की उंगली कहते हैं. शहादत की उंगली को जो है आपने बुलंद किया. एंड टुवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ. एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पीपल सेड, और लोगों की तरफ इशारा करते हुए आपने फरमाया, ओ लॉर्ड. उंगली, इस शहादत की उंगली खड़ी करके आप अल्लाह ताला से मुखातिब हुए लोगों के सामने. ओ लॉर्ड, ए मेरे परवरदिगार. बियर थो विटनेस अनटू इट, अल्लाह ताला के रसूल क्या फरमाते हैं, ए अल्लाह तू इस पर गवाह रहना. अनटू, इस पर. विटनेस, गवाह.
ہی، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، او لارڈ بیئر تھو وٹنس انٹو اٹ، اس پر گواہ رہنا. دا ہولی سرمن واز ڈلیورڈ بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دا پلین آف عرفات. عرفات پلین کہتے ہیں میدان کو، میدان عرفات کے میں آپ نے یہ خطبہ دیا. نیئر دا ہل نیمڈ جبل رحمت، اور اس پہاڑی کے نزدیک جسے جبل رحمت کہتے ہیں. اٹ کین بی ویل بی کلیمڈ ایز دا فرسٹ ایور یونیورسل، اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا کا کائناتی سب سے زیادہ یونیورسل چارٹر آف دا ہیومن رائٹس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ انسانی حقوق کا آغاز رابطہ ہے. آل دا obligations آف دا اسلام ہیو precisely اینڈ بیوٹیفلی مینشنڈ therein، اور یہ ایسا کتابچہ ہے یا ایسا آفاقی ضابطہ ہے جس میں بڑے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے، انتہائی خوبصورتی اور مختصر انداز میں جو ہے وہ آپ کے اصول و ضوابط کو بیان کیا گیا ہے. سو اسٹوڈنٹس، آج ہمارا یہاں لیکچر مکمل ہوا، ہمارا چیپٹر کلوز ہوا. انشاءاللہ کل میں اس کی ویکیبلری کے ساتھ آپ کو پوری ایکسرسائز کے ورڈ میننگ آنسر کوسچن کرواؤں گی آن دی بورڈ. سو اسٹوڈنٹس، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کی جو بیل ہے اس کو بجانا نہ بھولیے گا، اور کمنٹس بھی دیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائکس بھیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ ہم اچھی سے اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز جو کہ آپ کے سبق سے اور آپ کے سلیبس سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو کنوے کرتے چلے جائیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.